These were the questions we were discussing. Look at that. Vertices is what is vertices is plus or minus 2, 0. एक रफ पिक्चर ड्रॉ कर लेना हमेशा. So vertices 2, 0 plus 2, that means it is ऐसे आएगा क्योंकि this is minus 2, 0, this is 2, 0. So that is, so now we understood transverse axis. Transverse axis is horizontal. Horizontal है तो हमें पता है equation will be x square by a square. X square will be positive term minus y negative along with the y square. So y square by b square is equal to 1. Now a is equal to 2. A is the distance from the center to the foci. Sorry, center to the vertex. And C is given. Foci is given as plus or minus 3, 0. That means either 3, 0 आएगा, इधर minus 3, 0. So उसमें से आपको मिलेगा C is equal to 3. C is equal to 3. So हमारे पास रिलेशन है C square is equal to A square plus B square. So 9 is equal to 4 plus B square. So आपको मिलेगा B square is equal to 5. So now your equation will become x square by a square. A square is 4 minus y square by b square. B square is 5 is equal to 1. Okay, clear? Now, uh, next question. We have to draw a rough picture. Vertices is 0, comma plus or minus 5. So 0, comma 5, 0, comma minus 5, 0, comma minus 5. So इसमें से आपको समझ में आएगा it is transverse axis is, इसमें से आपको समझ में आएगा transverse axis is vertical. वर्टिकल है तो इक्वेशन हो जाएगा सो वाई स्क्वायर पहले आएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन अलोंग विथ एक्स स्क्वायर आएगा वाट एवर पॉजिटिव टर्म उसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है वाट एवर नेगेटिव एक्स का डिनोमिनेटर बी स्क्वायर है सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल नॉट चेंज अभी आपको मिला ए इज इक्वल टू 5 बिकॉज ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टेक्स 4c is 0 plus or minus this is 0, 8 this is 0, minus 8. So C is equal to 8 because C is the distance from the center to the foci. So again formula है C square is equal to A square plus B square. So 64 is equal to 25 plus B square. So उसमें से आपको मिलेगा B square is equal to 64 minus 25. So which is equal to 49. So आपका sorry 39. So आपका इक्वेशन बन जाएगा योर इक्वेशन इज y square by a square that is 25 minus x square by b square that is 39 is equal to 1. Got it? Next question. So 9 to क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं. अभी देखो 10 and 11. 10th में देखो बोला है कि 4c 4 so rough picture already 4c is plus or minus 5, 0. So minus 5, 0 plus 5, 0. So it should be like this. So हमें पता है कि transverse axis is horizontal. सेकंड में देखा है कि सेकंड में बोला देखो साथ में करेंगे जल्दी जल्दी 4c is 0, plus so इधर 0, 13 इधर 0, minus 30. So आपको आएगा ऐसे आएगा. So इधर आपको मिलेगा transverse axis is vertical. Then
इधर दिया गया ट्रांसवर्स एक्सिस इज लेंथ 8, हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है 2a, so 2a is equal to 8, whether a is big or small, transverse axis का length 2a. इधर conjugate axis, hello, I lost connection in between, so sorry, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so we are discussing this question. So I will okay, I'll just tell you very okay, already मैंने बताया था इतना. So here rough picture draw कर लेना. So इसमें से आपको मिला this is -5,0, this is 5,0. So इसमें से आपको समझ में आएगा transverse axis is horizontal, and here foci is 0 comma, so this is 0 comma 13, this is 0 comma minus 13. So इसमें से आपको पता चलेगा transverse axis is vertical. Now here major axis का transverse axis का length 8, so whatever the value of a, smaller or big, transverse axis always 2a. Conjugate axis का length 2b, so 2b is equal to 24, इधर b is equal to 12, इधर आपको मिलेगा a is equal to 4. अभी horizontal है तो इक्वेशन है x square by a square minus y square by b square is equal to 1. वर्टिकल है तो इक्वेशन है y square by a square minus x square by b square is equal to 1. So either a is equal to 4 in the left case. So a is equal to 4 and c is equal to 5. So c square is equal to a square plus b square. So 25 is equal to 16 plus b square. So उसमें से आपको मिलेगा b square is equal to 25 minus 16 which is equal to 9. राइट साइड में आपको मिलेगा c is equal to 13, so c square is equal to a square plus b square, so 13 square 169 is equal to a square plus 144. So उसमें से आपको मिलेगा a square is equal to 169 minus 144 which is equal to 25. So आपका इक्वेशन बन जाएगा y square by a square is 25 minus x square by b square is 144 is equal to 1. लेफ्ट साइड में आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हमने निकाला 9, so which is equal to 1. Got it? Okay, clear? Now 12 and 13 देखो इधर क्या बोला है 4c. सो आप देख सकते हैं 3√5, 3√5, 0. दैट मीन्स आपको समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल है तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो सी इज इक्वल टू 3√5. एंड क्या बोला है कि लैटस रेक्टम का लेंथ 8, लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 8, मतलब लैटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 8. दैट मीन्स 2b square is equal to 8a. So that means b square is equal to 4a. Okay, so we know that c square is equal to a square plus b square. So c is 3√5. 3√5 का square, 3 square is 9. 5√5 का square 5, so 9 into 5 45. A square plus b square is again 4a, क्योंकि हमें इधर से मिला है लाटस रेक्टम का एक्सप्रेशन से. लाटस रेक्टम इज 8, लाटस रेक्टम का फॉर्मूला था 2b स्क्वायर बाई 8, उसमें से हमें मिला है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो आपको मिला a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 is equal to 0. So we have two numbers which is 9 and 5. So a plus 9 into a minus 5 is equal to 0. So आपको मिलेगा a is equal to minus 9 और a is equal to 5. Okay. Correct.
but but a is equal to -9 not possible, राइट? क्योंकि आप देख सकते हैं वर्टेक्स 4c के पहले आना चाहिए ना, वर्टेक्स 4c के पहले आना चाहिए. सो -9 3√5 मतलब √5 का समथिंग, इट इज समथिंग लाइक 3 इंटू 2 पॉइंट समथिंग, सो आपको मिलेगा 6 पॉइंट समथिंग, इजंट इट? Yes, sir. या सो ए का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू -9 और 9 वॉट एवर इट इज, 9 -9 है तो इट्स नेगेटिव है, नेगेटिव सिंबल, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. Even though it is positive 9 है तो it is not possible because vertex should come before 4c. So 6 से less होना चाहिए. That means you will get a is equal to 5. 5. Okay. So then your equation is, now your equation is x square by 25 minus y square by b square. आपको पता है b square is equal to 4a. So 4 into 5 which is equal to 20. So इधर आएगा 20 is equal to 1. ठीक है? The same way you can try the next one also, 13 also. ठीक है? इधर उतना है कि सिर्फ ये क्या होगा, ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू. नाउ इधर देखो, सेम vertices given, vertices given. So vertices देखो 7,0, so 7,0 minus 7,0. तो इसमें से हमें समझ में आया है कि इट इज लाइक दिस. रफ पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल. सो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो इधर हमें पता है कि सी ए इज इक्वल टू 7. अभी ई इज इक्वल टू सी बाई ए, ई इज इक्वल टू सी बाई ए. जस्ट होल्ड ऑन, मेरा मोबाइल स्टक हो गया. ओके, ई इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज सी बाई ए इज इक्वल टू 7. C is equal to okay, A is equal to, so C by 7 is equal to 7 because either A is also 7 because vertex is plus or minus 7 comma 0. E is equal to, मैंने mistake बनाया इधर, E is equal to 4, E is equal to C by A, C by A is given as कितना 4 by 3. So C by 7 is equal to 4 by 3. C by 7 is equal to 4 by 3. So C is equal to 28 divided by 3. C is equal to 28 divided by 3. So हमें तो ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए. सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सी इज 28 बाई 3 उसका स्क्वायर माइनस ए इज 7 का स्क्वायर. ओके, so 28 का square actually 784 divided by 9 minus 49, so which is equal to 784 minus 49 into 9. 49 into 9 is 784. Okay, 49 into 9, that you have to multiply. 49 into 9 which is equal to 414. So 414 divided by 9, so 784 minus 414 which is equal to एक मिनट है, 9 into 49, 49 into 9, 441, 441, so minus 441, so 784 minus 44, that is 343, which is equal to 343 divided by 9. So b square का वैल्यू मिला. So आपका इक्वेशन x square by a square is a is 749 minus y square by b square is 343 divided by 9 is equal to 1. So ये आप लिख सकते हैं x square by 49 minus 9 ऊपर जाएगा, 9 y square divided by 343 is equal to 343.
is equal to 1. 1. That's the equation. Okay. And last one, which is equal to, okay, इधर देखो 4c दिया है 0 कॉमा रूट 10 0 कॉमा माइनस रूट 10. तो हमें पता है इट इज ओपन्स like it is vertical transverse axis. Okay, so vertical transverse axis, the equation will be it is y square by a square minus x square by b square is equal to 1. So इधर आपको मिला है c is equal to root 10. That is only thing you know. C is equal to root 10. Okay. Now इसमें से आपको पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो सी स्क्वायर इज रूट 10 का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इंफॉर्मेशन वी हैव. अभी दिस इज पासिंग थ्रू 2,3, पासिंग थ्रू 2,3. सो क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. सो वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 बाई ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 3 square 9 by a square minus x is equal to 2 square is 4 by b square is equal to 1. सो अभी 2 वेरिएबल आ गया, बट हमें पता है 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई, इधर से आप बी स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं 10 माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं. सो दिस इज 10 माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना. 9 इंटू, सो 9 इंटू 10 90 माइनस 9 इंटू ए स्क्वायर 9a square minus 4 into a square 4a square the whole divided by a square into 10 minus a square आते था. Okay, a square into 10 minus a square which is equal to 1. तो आपको मिलेगा 90 माइनस 13 a square is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10a square minus a to the power 4. So that means a to the power 4 लेफ्ट साइड में आएगा प्लस a to the power 4 माइनस 13 द माइनस 13 माइनस 10, सो माइनस 23 a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 90 इज इक्वल टू 0. तो आप देख सकते इट इज अ पॉलिनोमियल इन, जैसे पॉलिनोमियल इन a स्क्वायर लाइक a स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 23 a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, जस्ट कंसिडर दैट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो क्या होगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, इट इज ऐसे हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0. ओके, so you have to find two numbers whose product is 9. So minus 18 minus 5, product is 90 sum, so it is x minus 8 into x minus 5 is equal to 0. So that means x is equal to 18 comma 5. So your x was nothing but a square. That means, so you got a square is equal to 18 or 5. Okay. So now when a square is equal to 18, b square is 10 minus 18 which is equal to minus 8, because b square is equal to 10 minus a square. So this is not possible. That implies a square is equal to 5. Got it? So when a square is equal to 5, a square is equal to 5, b square is, so right here, so when a square is equal to 5, b square is 10 minus a square the, so which is 10 minus 5 which is equal to 5. So आपको इक्वेशन बन जाएगा y square by a square, that is 5, minus x square by b square is also 5 is equal to 1. Clear? And this type of parabola is having a particular name that is known as equilateral hyperbola. याद है?
मैंने बोला था A and B are same है तो that type of hyperbola is known as equilateral hyperbola. Okay, got it? Yes, sir.